New American Diabetes Association recommendation are screen for diabetes in all age greater than 35 years of age. Keep BP around 130 से लेकर 130 by 80 mmHg. Low density lipoprotein low density lipoprotein less than 70 mg per dl. Previous was less than 100 mg per dl. To achieve this, add ezetimibe or PCSK9 inhibitor to statin therapy. 40 से लेकर के 75 years with high cardiovascular risk give high intensity statin therapy. Above 75 years of age continue statin. For healthy patient who with no other illness and at low risk of hypoglycemia, aim HbA1c at less than 6.5 percentage. For patient with concurrent illness or at risk of hypoglycemia, individualized HbA1c value greater than 6.5 percentage. Diabetic with established atherosclerotic cardiovascular disease, SGLT2 inhibitor and GLP-1 receptor agonist are recommended. They also reduce progression of chronic kidney disease (CKD). New American Diabetes Association recommendation are low density low density lipoprotein, less than 70 mg per dl, less than 70 mg per dl. Previous was less than 100 mg per dl. Previous was less than 100 mg per dl. To achieve this, to achieve this, add ezetimibe, add ezetimibe, add ezetimibe, add ezetimibe or PCSK9 inhibitor, PCSK9 inhibitor to statin therapy, to statin therapy. 40 से लेकर के 75 years with high cardiovascular risk, give high intensity statin therapy. Above 75
75 years of age continue statin. For healthy patient, with no other illness, with no other illness and at low risk for hypoglycemia, MHbA1c, glycated hemoglobin, MHbA1c at less than 6.5 percentage. For patient with concurrent illness, paneer masala. For patient with concurrent illness, and at risk for hypoglycemia, individualize HbA1c value greater than 6.5 percentage. Diabetic with established atherosclerotic cardiovascular disease, SCVD, SGLT, serum glutamate transaminase, okay, SGLT2 inhibitor. Diabetic with established atherosclerotic cardiovascular disease, SGLT2 inhibitor or GLP-1 receptor agonist are recommended.
They also reduce progression of a CKD, chronic kidney disease. They also reduce progression of a CKD. Type and characteristic feature of each type of diabetes mellitus. Type and characteristic characteristic feature. Type and characteristic feature of each type of diabetes mellitus. नंबर 1 कॉलम फीचर का होगा, देन आपका टाइप 1, देन टाइप 2, देन मोदी 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 और मोनोजेनिक डायबिटीज। मोनोजेनिक मोनोजेनिक डायबिटीज, देन लाडा, LADA, लाडा। ओके, ना फीचर में अगर हम देखेंगे ऑनसेट वाइज, ऑनसेट में टाइप 1 का जो ऑनसेट होता है वो लेस देन 30 ईयर में होता है। इसकी फीचर लेस देन 30 ईयर में टाइप 1 डायबिटीज आपको हो सकता है। टाइप 2 डायबिटीज आपको जनरली ग्रेटर देन 30 ईयर होगा। एंड मोदी या मोनोजेनिक डायबिटीज में आपका ये जनरली चाइल्डहुड एंड ईयरली अडल्टहुड, मतलब अडोलसेंट पीरियड में, चाइल्डहुड बचपन में भी हो सकता है, चाइल्डहुड एंड ईयरली अडल्टहुड इसमें हो सकता है। लाडा जनरली आपका 30 से लेकर के 50 ईयर में होगा, 30 से लेकर के 50 ईयर लाडा। देन अगर फीचर की बात करेंगे तो यहाँ पर बिल्ट, BUILT, बिल्ट। टाइप 1 डायबिटीज जनरली थिन, दुबले पतले इंसान को होता है। टाइप 2 जनरली देखा जाता है कि ग्रेटर देन 50% पेशेंट हु आर इन ओबेस कंडीशन। देन मोदी या मोनोजेनिक डायबिटीज का जो बिल्ट होता है वो जनरली यहाँ पर नॉर्मल ही रहता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन लाडा में जनरली क्या होता है, लाडा जनरली लीन, दुबले पतले इंसान को हो सकता है। देन सी पेप्टाइड, सी पेप्टाइड टाइप 1 डायबिटीज में या तो नील होगा या फिर ये लो होगा। देन टाइप 2 डायबिटीज में सी पेप्टाइड आपका हाई रहता है। देन मोदी या मोनोजेनिक डायबिटीज में ये पॉजिटिव पाया जाता है। देन लाडा में ये होगा हायर देन इन टाइप 1 डायबिटीज एट डायग्नोसिस। पॉजिटिव हायर देन in type 1 diabetes mellitus at a diagnosis.
देन एंटीबॉडी, एंटीबॉडी 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 टाइप 1 डायबिटीज में पॉजिटिव है, टाइप 2 में आपका नील आएगा, मोदी में भी आपका नील आएगा, लाडा में पॉजिटिव। देन मैकेनिज्म की अगर हम बात करेंगे तो टाइप 1 का जो मैकेनिज्म होता है वो ऑटो इम्यून के कारण होता है, ऑटो इम्यून। नाउ टाइप 2 का जो मैकेनिज्म होता है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस होने से, इंसुलिन रेजिस्टेंस होने में ये हो सकता है। मोदी या मोनोजेनिक डायबिटीज के क्षेत्र में मैकेनिज्म क्या होता है, जेनेटिक म्यूटेशन, जेनेटिक म्यूटेशन, जेनेटिक म्यूटेशन। नाउ लाडा में ये ऑटो इम्यूनो डैमेज टू पैनक्रियाज, ऑटो इम्यूनो, ऑटो इम्यूनो डैमेज, डैमेज टू पैनक्रियाज। नाउ इंसुलिन मैकेनिज्म खत्म हो गया, इंसुलिन की रिक्वायरमेंट, इंसुलिन रिक्वायरमेंट। तो टाइप 1 में इंसुलिन की रिक्वायरमेंट यहाँ पर पॉजिटिव मतलब हो सकता है शायद। देन टाइप 2 में इंसुलिन की रिक्वायरमेंट ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट से काम चला सकते हो या फिर इंसुलिन लगेगा। देन मोदी या मोनोजेनिक डायबिटीज में सल्फोनिल यूरिया दे सकते हो या फिर इंसुलिन दे सकते हो। लाडा में जनरली विद इन 1 to 5 ईयर ऑफ डायग्नोसिस चलता है प्लस इनिशियल ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। सो लाडा में आपका विद इन 1 से लेकर के 5 साल लगेगा किसमें, डायग्नोसिस करने में। एंड इनिशियल आप क्या दे सकते हो, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट दे सकते हो। देन डीके डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, डीके डायबिटिक कीटोएसिडोसिस टाइप 1 में आपका पॉजिटिव है, टाइप 2 में ये जनरली लो होता है एंड मोदी में ये लो रहता है एंड लाडा में ये पॉजिटिव। देन अदर ऑटो इम्यून डिजीज, अदर ऑटो इम्यून डिजीज। सो टाइप 1 में पॉजिटिव आएगा। टाइप 1 पॉजिटिव। टाइप 2 में अदर ऑटो इम्यून डिजीज क्या हो सकता है, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस IR, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकता है, PCOS हो सकता है, PCOS। देन ट्राइग्लिसराइड आपका इंक्रीज होगा, एब्डोमिनल ओबेसिटी हो जाएगा, एब्डोमिनल ओबेसिटी। नाउ मोदी में ये नील रहेगा, पर्सनल और फैमिली हिस्ट्री ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज हो जाएगा। लाडा में क्या हो जाएगा, पर्सनल और मतलब लाडा में अदर ऑटोइम्यून डिजीज की अगर फीचर की हम अगर बात करेंगे, लाडा में लाडा का फीचर क्या हो जाएगा, पर्सनल और फैमिली हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज खत्म।
सो एडी मतलब ऑटोजोमल डोमिनेंट, सीवीडी मतलब कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, डी के मतलब डायबिटिक कीटोएसिडिस, जीडीएम गैस जेस्टेशनल डायबिटीज, जीडीएम, जीडीएम फुल फॉर्म होता है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। देन HbA1c मतलब ग्लाइकेलेटेड हेमोग्लोबिन, HTN हाइपरटेंशन, लाडा का मतलब होता है LADA लाडा, लाडा का मतलब होता है लाटेंट ऑटो इम्यून, ऑटो इम्यून डायबिटीज, डायबिटीज इन अडल्ट, इन अडल्ट। सो L फॉर लाटेंट, A से ऑटो इम्यूनो, D से डायबिटीज, A से अडल्ट। ठीक है। एंड मोदी का मतलब होता है मोदी, 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 मोदी का मतलब होता है मैच्योरिटी, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ द यंग। OH मतलब ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। देन PCOS मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, पॉलीसिस्टिक ओवरी, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। TG मतलब ट्राइग्लिसराइड। Then type 3C diabetes mellitus pancreatogenic, डायबिटीज एसोसिएटेड विथ डिजीज मतलब सिस्टिक फाइब्रोसिस, हेमोक्रोमाटोसिस एंड कैंसर, pancreatitis, ट्रोमा और सर्जरी ऑफ एक्सोक्राइन pancreas, often misdiagnosed as type 2 diabetes mellitus. Pancreatic antibody autoantibodies are absent. Low C-peptide. Insulin requirement within 5 years of diagnosis. Risk of diabetic ketoacidosis is low, but hypoglycemia is present. टाइप 3C डायबिटीज मेलाइटस और पैनक्रियाटोजेनिक, पैनक्रियाटोजेनिक डायबिटीज एसोसिएटेड विथ डिजीज, विथ डिजीज मतलब आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, हेमोक्रोमाटोसिस,
हेमोक्रोमाटोसिस and cancer. Diabetes associated with cystic fibrosis, हेमोक्रोमाटोसिस, कैंसर, या फिर आपका पैनक्रियाटिटिस, ट्रॉमा, और सर्जरी ऑफ एक्सोक्राइन पैनक्रियाज, सर्जरी ऑफ एक्सोक्राइन पैनक्रियाज। और सर्जरी ऑफ एन एक्सोक्राइन पैनक्रियाज often misdiagnosed as type 2 diabetes mellitus. Pancreatic autoantibodies are absent. Pancreatic autoantibody are absent. Low C peptide, insulin requirement within 5 year of diagnosis. Insulin requirement within 5 year of diagnosis. Insulin requirement within 5 years of diagnosis. Risk of diabetic ketoacidosis is low. Risk of decay आपका लो आएगा, but hypoglycemia is present. हाइपोग्लाइसेमिया आपका प्रेजेंट होता है। टाइप 1 डायबिटिस मेलिटस, टाइप 1 डायबिटिस मेलिटस। Clinical feature if present at any age, any stage of age, that suggest the diagnosis of a type 1 diabetes mellitus. Clinical feature if present at any age, that suggest the diagnosis of a type 1 diabetes mellitus are marked and unexplained recent weight loss. Unexplained recent weight loss. A short history with severe symptom जैसे कि पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया। A short history
A short history with severe symptom, with सीवियर सिम्टम, जैसे कि आपका पॉलीयूरिया या फिर पॉलीडिप्सिया। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एट फास्ट प्रेजेंटेशन, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस आपका फास्ट प्रेजेंटेशन में देखा जाएगा। ठीक है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस यस टाइप 1 में होता है। ए पर्सनल और फैमिली हिस्ट्री ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज, भगवान। ए पर्सनल और फैमिली हिस्ट्री ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज। ए पर्सनल और फैमिली हिस्ट्री ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज, जैसे कि आपका हो जाएगा हाइपो या फिर हाइपर थायराइडिज्म, हाइपर थायरॉइडिज्म, थायरॉइडिज्म। देन celiac, spore, SPRUE, spore, sprue, pernicious anemia, pernicious anemia without family history of a type 2 diabetes mellitus, without family history of a type 2 diabetes mellitus, especially in a patient without a history of overweight, especially in a patient without a history of overweight, is also suggestive
of a type 1 diabetes mellitus? हे भगवान. Latent autoimmune diabetes of adult. Diabetes of adult. Type 1.5 diabetes mellitus. Type 1.5 diabetes mellitus. Without an immediate need for insulin, but within 5 years they may require insulin, that is appear to be on the spectrum of insulin deficiency between type 1 diabetes mellitus and type 2 diabetes mellitus. Poor response to OHA. Okay. Without an immediate need for insulin, but within 5 years they may require insulin, that is appears to be on the spectrum of insulin deficiency between type 1 diabetes mellitus and type 2 diabetes mellitus. Poor response to OH. Maturity onset diabetes of young. Modi. Mild fasting hyperglycemia. Mild fasting hyperglycemia. No acanthosis
नाइग्रिकांस, ये क्या होता है देखेंगे। नो अकैंथोसिस माइग नाइग्रिकन, ओके, जो भी। डायग्नोसिस बाय जेनेटिक टेस्टिंग, डायग्नोसिस डायग्नोसिस बाय जेनेटिक टेस्टिंग primarily for mutation of primarily primarily for mutation in HNF4A। दूसरा होता है HNF1A and the GSK gene and the GCK gene, okay। suspect MODY if onset of diabetes mellitus is less than 25 years. Family history of diabetes mellitus. Family history of diabetes mellitus in every generation for more than 2 generations. In every generation for more than 2 generations. Lack of obesity,
lack of obesity. Okay. Then negative, isolate, autoantibody, autoantibody, commonly done, GAD65, that is glutamic acid decarboxylate. Gestational diabetes mellitus. Gestational diabetes mellitus रेफर टू पेज नंबर 621 से लेकर के 625. ओके. जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस. ओके, छोड़ दो. स्क्रीन फॉर DM इन द फॉलोइंग ग्रुप. Screen for diabetes mellitus in the following group. Family history of a DM. Family history of a diabetes mellitus. कौन आज इनके होशी खाने सारी आड़े.
family history of diabetes mellitus, metabolic syndrome, cardiovascular disease CVD, उसके बाद हाइपरटेंशन HTN, डिसलिपिडेमिया, history of gestational diabetes mellitus, history of gestational diabetes mellitus, that is GDM, polycystic ovarian disease. Number 7, polycystic ovarian disease, that is polycystic मतलब C, ovarian disease PCOD. Okay, patients on steroid, born with low or high birth weight, born with low or high birth weight. If sugar is normal, repeat screening in 3 years for low risk subject and yearly for high risk subject. If impaired glucose tolerance, that is impaired glucose tolerance IGT, or impaired fasting glucose, that is impaired fasting glucose IFG, repeat screening in 1 year. All pregnant women should be screened at 24 से लेकर के 28 week if the risk is low. All pregnant women should be screened at 24 से लेकर के 28 week if the risk is low, or at if she belongs to a high risk group. तो स्क्रीनिंग प्रेग्नेंट वुमेन में स्क्रीनिंग करना चाहिए 24 से लेकर के 28 वीक में, इसमें स्क्रीन होना ही चाहिए. एंड रिस्क अगर लो है, स्क्रीनिंग करने के बाद हमें अगर पता चल रहा है
कि रिस्क अगर लो है और at if she belongs to a high risk group, चाहे रिस्क लो हो चाहे रिस्क हाई हो, प्रेग्नेंट वोमेन का हमेशा स्क्रीनिंग होना चाहिए 24 से लेकर के 28 वीक में। ठीक है, ये हो गया। देन लैबोरेटरी टेस्ट इन डायबिटीज मेलाइटस। Laboratory test in diabetes mellitus: fasting and 2-hour postprandial blood sugar, glycolated hemoglobin, HbA1c, C-peptide level measure in blood and urine, insulin, pancreatic beta cell, proinsulin, C-peptide, okay, C-peptide, okay, C-peptide connect insulin A and B chain in proinsulin molecule. C-peptide is released during the cleavage of insulin from proinsulin. It is a marker of endogenous insulin secretion and diagnosis of spontaneous hypoglycemia. It is done to differentiate type 1 and type 2 diabetes mellitus. It is high in type 2 diabetes mellitus, very low or nil in long standing type 1 diabetes mellitus। आज के लिए इतना ही।